Good evening, friends. We have done various sessions with Mr. KBS Sidhu, a former financial commissioner of Revenue Punjab. And therefore, one aspect which has always weighed in our mind is, why not understand from a person who has had the hang of understanding the nuances of the revenue aspects. Therefore, time and again, we keep on requesting him to share his knowledge. And one fascinating fact is, I've seen that besides coming on the channel of Beyond Law CLC, he's time and again approached by many people, including Mexipa, to train and make the things simplified, or what you call unblocking the blockchains in the mind of anyone. Stamp Act, Undervalued and Understamped documents, including their admissibility in evidence, is today's topic, where Mr. Sidhu will take us to the journey to understand the same aspects in a simplified manner, which he always does. We have also requested him to share at the end of the session, once he takes us through the English, to share the insights in Punjabi language, which a lot of people have requested us. And thank you, sir, once again for accepting our invite, and over to you. Thank you, Mr. Chhatrath. I'm beholden to you as well as Chhatrath Law Chambers for allowing me the opportunity to address your very august audience. And GB Shaw said in a different context, those who can do, those who can't teach. So I don't regard myself as a consummate teacher, but I'll definitely try and share my experiences or my perspectives with focus on Stamp Act, which is a British era enactment of 1899. And of course, it is intersecting with the Indian Registration Act 1908 and the Transfer of Property Act 1882. I think we've had a longish talk earlier on the intersection part of it, but it becomes too heavy, and that is basically for the people who are actually, going to be registering the documents and seeing the stamp duty aspects and the registration act aspects and the appellate authorities and so on. Here, I think the whole focus is squarely on what Stamp Act is, what is its objectives, and apart from the most obvious aspect of raising revenue for the state exchequer, we are also going to see the implications from your side if you are a party who's registering a document or executing an instrument, not necessarily a registered one, which is subject to payment of stamp duty. Who determines what stamp duty is payable if there are disputes of whether it is understamped or undervalued? These are two, very different concepts, and we will try to take them, one by one. And of course, we have sufficient time at the end for question and answers. I do not make any claims to be an authority on this. This is a huge, wide subject, and the schedule of the Stamp Act insofar as what amount of stamp duty is payable for what instrument varies from state to state. There are also, case laws decided up to the Supreme Court. For instance, you want to transfer shares in a limited company. If it is a physical document, what happens? If demat accounts and electronic transfers are taking place, what happens? Where is it chargeable? Those type of things are, I think, in the domain of the corporate sector and national stock exchanges and Security and Exchange Board of India, and states trying to quarrel with each other. कि जी आपकी registered office तो Bombay में है, transaction कहाँ हुई? Is it taking place in the servers of the National Stock Exchange and so on? So those are also issues which have huge implications insofar as the state revenue is concerned. But I think from the angle of a person, whether a legal expert, legal practitioner, or for any person who is dealing with these instruments, either in professional capacity or in his own individual right, and any educated person, we'll try to focus on that. So Stamp Act, first of all, we should be very clear, unlike the other two acts, the Transfer of Property Act and the Registration Act, is essentially and basically an act to raise revenue for the government. It is basically a fiscal measure, जिसे कहते हैं कि पैसा कैसे, it is a tax, whether you call it a stamp duty or whatever, it is a tax within the
meaning of the Constitution of India. And as we know, you cannot impose a tax except with the authority of law. So here is the law, 1899, British era enactment. There's a schedule, and the power to amend the schedule is given to the respective state governments. And schedule basically lays down the rates for various instruments and documents and can be amended by the state government. So you can raise the stamp duty from 5% to 6%, reduce, put some differential duty rates for women and so on. So we start basically by emphasizing that as far as the government is concerned, the basic and fundamental overriding principle for the revenue authorities, whether it is the Tehsildar sitting there and registering the document, working under the framework of the Registration Act, register karna hai ya nahi karna, everything is to be decided within the framework of the Registration Act. But since it is subject to stamp duty and variety of instruments, and the major instruments are sale deeds, and therefore उस पे क्या ड्यूटी लगनी है, क्या कलेक्टर रेट है, क्या what is the stamp duty ad valorem rate and so on, they are then working under the framework of the Stamp Act. So as far as the statutory authorities under the Stamp Act goes, the most important, of course, is the collector, which is generally the district collector, but sufficiently powers have also been delegated to the additional deputy commissioners to exercise the powers of the collector under the Stamp Act. And the divisional commissioner in case of Punjab is one of the appellate authorities. In most of the other cases for undervaluation, the appeals from the district collector or the deputy commissioner or the district magistrate, but collector is the word used in the Stamp Act, lies to the district judge, that is the session judge on the civil side. But as far as Punjab is concerned, that has been amended to keep it within the domain of the revenue authority. So if there is an order passed by the collector under section 47A, so commissioner is the authority, and the financial commissioner revenue is referred to as the chief controlling revenue authority. Within him lies the overall supervision, direction, and control, and also the final word as to what is the stamp duty chargeable for very complex instruments from audit angle, from the finance department angle, from the angle of admissibility as evidence, lies with the chief controlling revenue authority. And there is, of course, contested opinion whether after the commissioner, is he also a kind of a revisional authority and so on. So coming back to the Stamp Act is also a great example of how fiscal federalism works within the framework of the Indian Constitution. Of course, those who are aware of how the Central Finance Commission works determines the state's share in the central taxes. So all the central taxes, whether it is Income Tax Act, whether it is your custom, central excise, central GST, they go into a common kitty, and that kitty is then to be shared first between the states and the central government. Normally 2/3 goes to the central government, successive finance commission, central finance commission awards, and within that there's a formula, and the state share in central taxes, Punjab normally has been getting little less than 2% or 2% maximum. The criteria and categorical formulas varies from central pay commission, finance commission to the other. But as far as the stamp duty is concerned, the stamp duty is 100% coming to the state exchequer. So if you want to see from Punjab government perspective, it could be 6,500 crores, for the last year. Budgeted amount could be 7,000 crores and 750 and so on. So this is the pure net own revenue receipts of the state government. And of course, this has got to do with the general transactions which are taking place, whether in the urban sector, whether in the rural sector, whether agriculture land, and so on and so forth. There are exemptions, but it is not the scope of this talk to go into those exemptions. But having said that, whatever revenue occurs from here, and that is why the state government at the level of the Tehsildar and Napsildar, who are at the cutting edge, registering the document, that is the time and place to collect stamp duty, and up to the collector and financial commission revenue,
we are very closely monitoring as to what amount of stamp duty has been, recovered. And then, of course, there are audit objections and so on, कि आपने कम ली है, and how to recover that. Are there questions of limitations or not? So stamp duty generally is charged ad valorem. And normally one would say that in Punjab, it is, let's say, 6% or 5% of the declared value. कि अगर आपने लाख रुपए की है, 10 लाख की है, करोड़ की है, so accordingly a transaction which is stated to be 1 crore, then 6% keeps on varying. There are other top on charges and Punjab Land Revenue Society fee and so on. We are not going to that. Registration fee is a separate thing. We are focused on stamp duty proper. So stamp duty proper basically would go by a valuation of what you declare in the instrument. कि जी मेरी 10 करोड़ की ये डील हुई है या मेरी 1 करोड़ की डील हुई है. So you have to pay the stamp duty upfront. Otherwise, the consequences will follow, which we can discuss. Now, first of all, when we joined service, there were no what are called as collector rates or circle rates and so on. So any person could, put any value onto a particular land and say कि ये मेरे तो 10 लाख का किले की हिसाब से रजिस्ट्री हुई है our deal. So तहसीलदार would say कि जी नहीं ये तो 35 लाख है वहाँ. So some type of negotiation taking place and so on and so forth. So then it came that why don't you fix up, some base rates, circle rates broadly, which are representative, and floor rates. And there was litigation at that time, something which is not prescribed in the schedule of the act. Then how could you have, floor rates being fixed? You have to, go by whatever declaration has been made regarding the, transaction amount. तो वो आप क्यों नहीं कर रहे? But what happened is by the time those rulings came, the average rates which came also became the rates at which district collector had put in those floor rates. And indirectly it was also a big boon, I would say, to the general rural masses where land acquisition was taking place, because land acquisition, among other things, Naya Land Acquisition Act aa gaya. We can, have a 2 hour discussion on that as to how to fix compensation under the new Land Acquisition Act. लेकिन जो पुराना था, basically the transactions happening 1 year before the notification to acquire land, Section 4 की, so those were considered. And therefore, if you were grossly undervaluing, आपको पता है कि 35 लाख का किला है and acre है, and if the average in your village is turning out to 10 lakh per acre, then the district collector and the other authorities and even the civil courts, when dealing with enhancement applications, were constrained by those. वो 15%, 30% salatium interest, तो basically उस पे ही चलेगा ना. So I think it is also a kind of a boon to the landowners, especially in the rural areas. And now when huge chunks of land are being acquired, especially in strip forms on the National Highway Authority and so on. So, I mean, by way of illustration, if the Delhi Katra highway pura liya jaye, and of course with the spur to Amritsar within the state of Punjab, my own hunch is that the basic and the fundamental award was in the vicinity of 15,000 crores, which is the net accretion from the National Highway Authority to the farmers. And incidentally, though not a part of the subject, under the new Land Acquisition Act, now this is very important from any person who faces this, whether urban property, rural property, any other property, anything which is part of the award, severance charges and so on, the entire amount is free from income tax. So therefore, previously there used to be a whole lot of litigation कि जी बेसिक रेट जो है उस पे तो नहीं है, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. But the interest portion is subject to tax, and sometime enhancement would take place after years. 5% enhancement hui, but the accumulated interest would be huge, and suddenly the farmers would be presented with the income tax demands. So luckily they have taken care of that. So आपकी urban है, rural है, जो भी है superstructure है, under the new Land Acquisition Act, it is free from income tax.
So we were referring to this in a passing this thing that the collector rates eventually have reflected into higher compensation payable by the government, whether the state government or the central government, whenever they acquire land for public purpose under the various laws, especially the New Land Acquisition Act. National Highway Authority Act has its own complete code, but broad principles of compensation as in the New Land Acquisition Act of 2013/14, they apply. Now, coming back to the digression, because I think is right now when you go to a tehsil to register, they have a very comprehensive, database in front of them, generally village-wise, generally city-wise. It can vary from sector to sector. Mohali jaoge aap, नए sectors का you have a basic base rate, and then you go to the further sector, 76 to 80, they may have a different rate. A city like Ludhiana, very complicated city within the limits, so they would have those rates. Even in the villages, you would have higher rates along the main roads, the national highways, and so on. So आप वहाँ जाओगे तो the deed writer, the registry clerk, and even they put up on the your website कि इससे काम आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी. So अगर आप वो करोगे तो it would be undervalued and certain consequences would arrive. Now let me straight away get into the concept of undervaluation, understamping. So these are two concepts which are generally confused with each other, and normally we talk in terms of undervaluation. Undervaluation का मतलब क्या है जी? आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो and the person who's buying and selling, they say ठीक है जी, हमारी तो डील ही 1 करोड़ की हुई है, and the sub registrar sitting with that कलेक्टर रेट्स और सर्कल रेट्स फाइल, वो कहेगा कि जी मेरे हिसाब से ये गैर मुमकिन लैंड है या ये इसमें ये है, तो मेरे हिसाब से ये 1 करोड़ 25 लाख की बनती है. सो ही विल एडवाइज यू कि जी आप स्टैंप ड्यूटी जो लगाई है आपने कम लगाई है, तो बराए मेहरबानी आप 1 करोड़ 25 लाख के हिसाब से लाइए. इन हिज आईज इट इज पोटेंशियली अंडर वैल्यूड. इट इज नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आपने तो बता दिया, यू हैव सेड कि जी हमारी 1 करोड़ के हिसाब से आपका जो पहाड़ा है, द टेबल, एवरीथिंग इज फिट एंड यू पेड द स्टैंप ड्यूटी. बट ही सेज कि जी आपकी अंडर वैल्यूड है, और ही हैज सम अदर रीजंस टू बिलीव कि जी कल आपके साथ वाले खसरे नंबर की तो ये फलां बंदे रजिस्ट्री करा के गए हैं उसी कॉलोनाइजर को, एंड आपका ये साथ वाला खसरा नंबर आप उसके आधे रेट पे करवा रहे हो. तो मेरे हिसाब से तो मैं वो रेट लूंगा नहीं, मेरी नौकरी को खतरा है एंड आई मे बी सस्पेंडेड. तो आप बराए मेहरबानी पूरी उसकी स्टैंप ड्यूटी लगाइए. In 99% of the cases, we are only working, the sub-registrar is working only and only by the collector rates which have been given. But those are the floor rates, and in the event he has strong reasons to believe that it is undervalued or grossly undervalued, then here is what happens. So a sub-registrar cannot refuse registration of an instrument which in his opinion is undervalued. He is only to form a prima facie opinion that it is undervalued and record a small memo of recording his grounds. It is not an adjudication which is taking place at this level. Then he registers the document. बेचने वाला अपना चला गया, खरीदने वाला अपना चला गया, register हो गई, and technically the transaction and transfer of title has taken place. नया मालिक बन गया, पुराने वाला चला गया. But that undervalued instrument duly registered, part of the stamp duty paid, full stamp duty under adjudication is not going to be returned to you. It will be impounded there and then under section 47A and referred to the district collector, the deputy commissioner, or the additional deputy commissioner, who will then conduct a summary inquiry. It is not a huge civil case of framing issues and so on. आपको नोटिस आएगा, बिना नोटिस के हो नहीं सकता. And they will then say this, you will say हमारा तो वही है, whatever grounds someone from the registration branch of the tehsil may or may not reach, and the collector will eventually pass a speaking order कि जी 1 करोड़ की नहीं थी, 1 करोड़ 25 की भी नहीं थी,
मेरे मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख की थी, तो आप इतना वो दीजिए स्टैंप ड्यूटी की कमी बेशी। नाउ उसमें स्टैंप एक्ट में बाय whom it is payable, normally the law of the land is that in absence of contract to the contrary, it is to be paid by the person who is purchasing the land. वो if your deed is silent, then it falls on the person who has purchased the land, which makes logical sense also कि जिसके नाम प्रॉपर्टी हुई है तो उससे रिकवर करने हैं एज एरिज ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो प्रॉपर्टी जिसके नाम होगी उसके अगेंस्ट ही प्रोसीड करेंगे। But having said that, in odd cases where people have got their own, way के मैंने मुझे कैपिटल की ज़्यादा पड़ना है, तो साहब, put the thing that the stamp duty is also being paid by the seller. So that cost of acquisition, etc., and transaction costs keep on adding. So in that case also, the collector is free to recover that amount either from him or you, because it is basically a charge on the property. It is also charge on your other estate and he can proceed against other assets also. और आपस का खरीदार और बेचने वाला का झगड़ा you will sort it out in the civil court. The government and the collector is concerned कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी थी साहब 1.25 करोड़ नहीं थी, 1 करोड़ नहीं थी, इसके 1 करोड़ 10 लाख पे मैंने लेनी है, ये आपकी बन गई, he'll issue a writ of demand, पे कर दोगे well and good, other attachment sale and other coercive processes, because these are dues and sovereign dues recoverable as areas of land revenue, they would come into place. Now the next stage is for you to go on appeal. Appeal, as I've submitted in case of the state of Punjab, is going to go to the divisional commissioner. तो वहाँ कोर्ट की तरह सुना जाएगा कि लर्नड कलेक्टर ने ये बोला, आप ये बोल रहे हो, and generally the commissioners tend to go and agree with the collector's assessment, and very few cases where high pitched type of assessment or vindictive assessments have taken place. There the divisional commissioner is free to tone it down. And uske baad, normally under normal circumstances, the Financial Commissioner Revenue or the Chief Controlling Revenue Authority does not interfere unless इस तरह का कोई केस हो कि one case is going to decide the fate of hundreds of other cases. I mean, something like जे पूडा और गमाडा की allotment तो साहब है 4,000 रुपये गज की, that allotment took place 20 years ago. आपने इंस्टॉलमेंट्स करके आज पूरा करके कन्वेंस डीड कर रहे हो, सरकारी एजेंसी है, so there is no question of your undervaluing or understating, but 47A says it will be charged on the price which the property would have fetched had it been sold in open auction on the date of the execution. तो वो जो 4,000 रुपये गज है आज 10,000 रुपये गज हो सकती है, 25,000 रुपये गज हो सकती है. So sometimes those type of issues come up, but those are tackled basically by the government by amending the schedule rather than allowing people to face this type of thing. हालांकि फैक्ट ये है कि अगर वो 4,000 रुपये गज अलॉट हुई थी गबाडा या पूडा से आपको कोई प्रॉपर्टी, it has changed hands numerous times, and it has been, the letter of intent has been transferred 1% fees लेके within officially the urban development authority offices, और फाइनल स्टेज पे ही सरकार ने आके आपसे स्टैंप ड्यूटी लेनी है. सो दैट वाज अ ग्रे एरिया, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट सेज कि ओके हम 30 दिन का वक्फा दे देते हैं, पुराने रेट पे होगा, एंड कीप्स ऑन गोइंग. बट दोज आर पॉलिसी मैटर्स. एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टैंप ड्यूटी देने पड़ेगी इन सो फार एज अंडर वैल्यूएशन इज कंसर्न्ड. दिस प्रोसेस इज वेरी मच sorted out. Before I go into understamping and the impact of understamping, इसमें कई बार ये होता है कि आपकी रजिस्ट्री हो गई, यू हैव डन द रजिस्ट्री, पेड, नो वन हैज रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन, आप घर को आ गए, आपका म्यूटेशन भी हो गया, इंतकाल भी हो गया. दैट म्यूटेशन एंड इंतकाल फॉर द रेवेन्यू लैंड इज एंटायरली अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट. वी कैन हैव 2 सेशंस कि वो इंतकाल क्यों करवाना है, 2 बारी क्यों बेचने खरीदने वाला धक्के खाए, why don't you do it simultaneously? But the objectives are different. The registered sale deed binds the 2 persons, it is a public notice, whereas in the intakal it is supposed to be in the open hearing of the village, and there can be any number of objections. Someone can say कि जी this person is claiming under a registered will, तो लड़कियां इतराज कर रही हैं, और someone will stand up and say कि जी this gentleman has signed an agreement for sale with me, अब ये उसको बेच गया.
So those type of entirely a different set under the Punjab Land Revenue Act 1887, उसमें आपको डील करना पड़ता है. बट हेयर इन सो फार एज द स्टैम्प ड्यूटी इज कंसर्न, अगर आपकी वहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, आप अपने घर रजिस्ट्रेशन डीड लेके चले गए, इंतकाल भी हो गया, 2 साल के बाद आपको कलेक्टर से नोटिस आता है कि आपकी दिस थिंग इज अंडर वैल्यूड, आप पेश होइए. एंड यू आर एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि मैं वहाँ गया, नो वन रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन, तो नाउ सडनली दिस नोटिस फ्रॉम द कलेक्टर हैज कम टू मी, एंड यू नो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माई पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी. उस वक्त वही रेट था, नो वन हैज ऑब्जेक्टेड. So what happens in these cases is that sometimes the audit, which is conducted by the comptroller and auditor generals, accountant general and so on, the constitutional authorities, they find in their own wisdom and they point out कि जी ये वो था, you have classified this as गैर मुमकिन, and अगर गैर मुमकिन था तो आपने तो रेट ज़्यादा क्यों नहीं लगाया, इसमें तो चेंज ऑफ लैंड यूज हो चुकी थी, so it was or you putting the agriculture land, and so on and so forth, whatever reason they may have. But that is not a gospel truth. That is only the beginning of an inquiry. So what normally happens in that cases is the matter lands up in each individual case before the collector, which is the DC or the ADC, and the limitation thereof is 3 years. So wo under section 47A(3), he then issues you a notice, and notice कि जी ये है आपका वो हो गया, and so on so forth. And the easiest and the best defense is अगर आपको it is more than 3 years happening since the registration took place, then technically it is time barred. So उसमें आप सीधा से ये सारा है हमारा, it was truly set forth in, and there is no reason has been given as to why you are now saying this, and even if it was change of land use of the adjoining had taken place, ours was agriculture land, ये खसरा गरदौरी की लगी है. But without prejudice to this, हमारा तो साहब ये आपकी लिमिटेशन में ही है, आप फंडामेंटली ये डिसाइड करें. सो कई उस पर भी खत्म हो जाते हैं. बट what sometimes then happens is there are also sections of prosecution under the Stamp Act, very mild penalty, but prosecution is prosecution. तो उस तरफ चल पड़ते हैं, because ultimately the stamp duty authorities and CAG audit and tentative draft para is going to the Public Accounts Committee in the State Vidhan Sabha and central government to the Parliament itself. तो वो होता है कि हम कंसीड नहीं करेंगे, 3 साल का वक्फा हुआ तो ऑडिट वालों को ब्लेम करें, और समटाइम्स द फाइल्स आर लैंग्विशिंग एंड लिंकरिंग इन द तहसील, तो दे वुड फॉल ऑन देम कि जी 3 साल आपने क्यों ज़ाया कर दिया, आपने पहले क्यों नहीं रिकवर किया. तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल will settle with the authorities कि यार ये करके करो अंडर प्रोटेस्ट हो whatever, जमा कराओ. और नहीं करवाओगे तो वो आपके रिमार्क्स कॉलम इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डाल देंगे कि दिस स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन दिस थिंग, ये भार मुक्त नहीं है, दिस हैज दिस लियन एंड सो ऑन. Tomorrow you want to sell, tomorrow you want to do anything, raise a loan against that, want to construct a building, and building plan वालों को जाएगा. Any other authority would be at liberty to say कि जी ये साहब आप क्या कर रहे हो, तो वो करके आओ. So most of the people do it. In the odd cases, this is where under section 27 of the act, it is onus lies on the persons executing that instrument to truly and fully reflect the details of the transactions. And it has been held that if you disclose or under declare या उस तरह की बात करते हैं, you are technically transgressing section 27. But before that, and finally, what is understamping? Undervaluation तो हो गया कि आप कह रहे हो कि जी ये 1000 रुपये 1 करोड़ का है, तो वो कहता है जी नहीं 1.25 करोड़ का है. अंडरस्टैम्पिंग है कि आपने यू आर सेइंग कि ये 1000 करोड़ का है, सॉरी 1 करोड़ का मेरा ये अपना डील है फ्लैट की, लेकिन मैंने लगानी नहीं जी इस पे, क्योंकि ये वो नोटिफिकेशन है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जाम्पशन है, ये हाउसवाइड का था, और व्हाटएवर रीजन, देन इट इज understamped. There the question of your transaction amount is not in dispute. You are saying कि मैंने लगानी नहीं for this thing. This is understamped. So, the cases of understamped which are generally rare,
तो he is under no obligation to register an instrument which is understamped. So आपका रजिस्टर नहीं होगा, टाइटल ही नहीं होगी. देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल. आपने कह दिया कि जरूरत नहीं यार, ये तो आप इतना क्यों कर रहे हो, 500 रुपए के स्टाम्प पे करके करो, ये तो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, फैमिली सेटलमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ. The major difficulty with understamped instruments is that should there be any legal dispute of any nature whatsoever, where you have to prove that document or use that document, then no authority, whether it is judicial, quasi-judicial, or tribunals, can use that as evidence. मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ. If some of you are uh, familiar with the Indian Banking Code and debt resolution and so on, sometimes in SARFAESI Act, debt recovery tribunals, there are asset reconstruction companies which keep on buying debt from the banks. आपने 200 करोड़ का बैंक पंजाब नेशनल बैंक को दिया हुआ है, बैड डेट हो गए, दे नो वी कैन नॉट रिकवर इट, देन इन स्टेप्स दी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड वो कहते हैं जी आप ऐसे करो, हम रिकवर करें ना करें, आपको 120 करोड़ में हमको दे दो. तो यू स्टेप इनटू द एआरसी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द बैंक, द पंजाब नेशनल बैंक. उनका एक डॉक्यूमेंट होगा एंड वो डॉक्यूमेंट जो है चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, Section 17 of Registration Act is very omnibus. Anything which purports to create, assign, declare, limit or extinguish right or title or interest in immovable property must be registered. तो वो रजिस्टर कराना पड़ेगा कि उस पर स्टैंप ड्यूटी कितनी लगनी है. Now, if there is any dispute regarding what stamp duty is payable there or not, and the matter has landed up before the Chief Controlling Revenue Authority, और उसने कहा कि जी ये साहब 2% एड वैलोरम लगना है, 2% 200 करोड़ पे लगना है या के 120 करोड़ पे लगना है, तो उसमें which is the amount which is to be considered. So that final word is that of the Chief Controlling Revenue Authority. और जब तक, unless High Court sets it aside, you will not be able to in any case get relief or use that as from the any litigation with the all these banking codes, DRT and so on. So जो अंडर स्टैंपिंग वाला तो बहुत ही खतरनाक है कि उसमें आप चंद पैसे, चंद रुपए, in trying to save by understamping the whole thing, चल जाए, but in the event it lands up into bona fide litigation where the stakes are high, then वो स्टैंप ड्यूटी बचे ना बचे, योर द इंटायर टाइटल, दिस थिंग कैन बिकम हेजी. सो देयरफॉर द ओवरऑल, तो मेरा यही है, राय कह लो, सलाह कह लो, एंड मे बी आई एम बायस्ड हैविंग सर्व्ड इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर 2-3 टेन्योर्स इन सेपरेट गवर्नमेंट्स, कि अपनी स्टैंप ड्यूटी वगैरह क्लीन रखो ताकि किसी किस्म की वही दिक्कत ना हो. One important thing which people often ask, वो ये है, and this is an open-ended question which I'll leave it to you also to ponder, because there are income tax aspects and फिर वो PMLA मनी लॉन्ड्रिंग वाली भी बात आ जाती है. वो बंदे कहते हैं कि जनाब आपने यहाँ कलेक्टर रेट 2 करोड़ रुपए किला रख दिया, किसी को जाके पूछ लो तो वहां तो 1.25 करोड़ से ज्यादा पर एकड़ है नहीं. अब आप कह रहे हो 2 करोड़ का किला जी, तो दी सब रजिस्ट्रार विल से कि जी ओके 2 करोड़ का किला हमें तो पता नहीं, हमारे तो कलेक्टर साहब का ही है सेट कि 2 करोड़ है, उसे कम करवाना है तो रजिस्ट्री कर देते हैं, वी विल इम्पाउंड इट. समटाइम्स पीपल से कि ऐसे करो जी, हम तो लिखेंगे यही, बिकॉज वी आर पेइंग बाय चेक 1.25 करोड़, लेने वाला भी खुश है, पेमेंट करने वाला भी खुश है, बायर भी खुश है, दूसरा भी खुश है. तो आपके 2 करोड़ पे हम स्टैंप ड्यूटी लगा देते हैं, वील मेक दिस रिसाइटल that our transaction actually is bona fidely 1.25 crore. However, since the collector circle rate is 2 crores and ad valorem duty becomes at 6%, 12 lakh, we are paying that, and therefore आप हमें कर दो रजिस्ट्री. दी सब रजिस्ट्रार इज मोर देन हैप्पी टू डू इट, क्योंकि उसको कोई त्रास नहीं है, नो ऑडिट, नो डीसी, उसने जो कलेक्टर रेट था उस पर ले लिया. और इसमें 2 चक्कर कल को, बिकॉज
the Income Tax Act enjoins the revenue authorities to 20 लाख अब 30 लाख है उससे ज्यादा की जो ट्रांजैक्शन है आर गोइंग टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी. देयर इज ऑल्सो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाली बात है. सो दैट विल ऑल्सो बी टाइड अप. तो उसमें दोनों फंसते हैं. कैसे फंसते हैं? जिसने तो खरीदा वो कहते 2 करोड़ का खरीदा, चेक तो आपने कहाँ दिया? 1.25 करोड़ का. इसका मतलब आपने 75 लाख रुपया ऐसे अंडर द टेबल दिया. तो दिस इज योर अनडिक्लेयर्ड इनकम. जो खरीद रहा है उसकी पोटेंशियली he is liable or at risk of being assessed in that particular financial year by that differential के 75 लाख पे आपके वो लगेगा जी बट इनकम टैक्स. और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी ये वो दैट इज सेपरेट. एंड जिसने बेचा ही डजंट गो स्कॉट फ्री आइदर कि जी कितने का बिका? 1.25 करोड़ का. तेरा तो भी 2 करोड़ का बिका. तो कैपिटल गेन अगर लगना होगा तो उसको वो 1.25 पे नहीं लगाएंगे, 2 पे लगाएंगे. एंड ऑफ कोर्स देर इज this common misapprehension, I would say, that all agriculture land is not a capital asset within the meaning of the Income Tax Act, and therefore the question of any capital gains etc. doesn't arise. अगर वो आपका TDS होता भी है तो रिफंड हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है. But if you read, it is not the subject of this discussion. The Income Tax Act and their statutory rules and so on, वो बकायदा एक स्लाइडिंग रूल है कि अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इतने किलोमीटर में है तो वो योर एग्रीकल्चर लैंड विल बी ट्रीटेड एज नॉट अ कैपिटल, विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट. छोटी है तो सारे. एंड therefore if you see a state like Punjab where municipal bodies big and small are proliferating this state, the agriculture land is generally, I would say, more than 50%, unless it is in the rural hinterland, would become एग्रीकल्चर लैंड. यहाँ चंडीगढ़ के इर्द गिर्द चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ गई. उधर से आओ खरड़ है, इधर से आओ कुराली है. सो ऑन सो फोर्थ. in one way or the other you can come within that picture. So these are the basically the issues which stamp duty and stamp act they do intersect. And we can discuss other things also, but उसमें मैं ये बोल रहा था कि what happens is if the matter has become time barred and you still receive a notice, वो खत्म हो जाएगा. But there is a very very, I would say, stringent and, if I may say so, a little unjust type of a provision. There is a little known law by the name of Economic Offences Inapplicability of Limitation Act 1974. Central Act है. तो it creates various statutes in which limitation है ही नहीं. Gold Control Act, Income Tax Act, कॉफी पोसा and so on so forth. And उसमें आपका स्टैम्प एक्ट भी है. So what we as revenue authorities have been doing, जहां वो 3 साल का हो गया तो in so far as recovering of an instrument which has been delivered and registered, and at the same time नॉर्मल क्रिमिनल ऑफेंस जो बनता है वो 3 महीने की सजा और है दी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और द BNNS विच एवर एप्लीकेबल. तो दैट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अपीयर्स टू बी ऑन द फेस ऑफ ए टाइम बार्ड. लेकिन क्योंकि स्टैम्प एक्ट आ गया तो देन उसमें बिकॉज ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1974 देर इज नो लिमिटेशन व्हाट्सोएवर. तो वो आपके खिलाफ इख्तकासा या क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देंगे. पता नहीं प्रूव होगी या ना होगी, समनिंग होगी, टेक्निकली बिकम एन एक्यूज. वो बंदा कहता है यार ये 40,000 की कमी बेशी निकाली है, दो और खत्म करो. एंड ऑल्दो द लॉ सेज दैट both are distinct, merely because you pay up now doesn't mean the prosecution would cease, but powers of composition and the state is mainly concerned with collecting the stamp duty. वो बात खत्म हो जाती है. But in so far as understamped is concerned, उसमें once you do pay the stamp duty, then the question of admissibility of evidence in a tribunal, court, high court, civil court, arbitration, wherever, that is cured. Because once the state has recovered its dues, then आपके merits पे जो भी होना है वो सारा होता रहेगा. So ये चतुर साहब मैं इतना ही कहना चाहता था. वी आर ऑलरेडी एट 6:41.
अगर हिंदी और पंजाबी में मैं ऐसे 2-3 मिनट में समराइज करूं तो यही है कि स्टैंप एक्ट का मतलब इस के सरकार के लिए स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी करना है। और इसमें अब फिजिकल स्टैंप्स आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। आप एचडीएफसी बैंक या विच एवर डेजिग्नेटेड बैंक उसमें अपना पैसा जमा करवाते हो, यू गेट अ कोड और समथिंग, दैट कोड इज न्यूट्रलाइज्ड एंड देयर इज द क्वेश्चन ऑफ फेक स्टैम्प पेपर्स, और एक स्टैम्प पेपर 2 बार ही यूज हो गया, उस तरह की बात वो खत्म होगी। दैट इज अ गवर्नेंस इशू। बट ओवरऑल स्टैंप ड्यूटी जो है स्टेट को जा रही है एज अ 100% टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट को जानी है। एंड अगर उसकी अंडर वैल्यू है कि घट कीमत ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ आपकी टाइटल इज कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन हैज बीन इफेक्टेड, 47A कैन बी इन्वोक्ड सब रजिस्ट्रार द्वारा तभी जब रजिस्ट्रेशन करने उपरांत। इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन अनलाइक इन केस ऑफ अंडरस्टैंपिंग। सो अगर आपके पास इस तरह के आते हैं तो बराए मेहरबानी स्टैंप ड्यूटी आप पूरी दें। और वो जो एक ट्रैप जो बड़ा है, जो वसीका नवीज वगैरह जहाँ स्टाम्प फरोश बता देते हैं कि जनाब ये तो ऐसे आप 10 बंदे पहले करवा गए हैं, ये रेट ही सरकार ने बहुत रखा हुआ है, 2 करोड़ कहाँ है रेट जनाब, आप करोगे हैं जी, पक्के का पैसा नहीं है आपके पास, तो आप 1.25 करोड़ ही दो, उस लिख दो कि स्टैंप ड्यूटी पूरी दे दी है। I mean, 90% chances are nothing may happen, but income tax statutes also have very long limitations, and उसमें once you get into the prosecution part of it, then predicate offense बन गया, तो साथ में PMLA, money laundering, which are very stringent laws, तो उसको हम जाना शुरू करें तो बेहतर यही है कि अपनी, even if you think that unless it is a matter of constitutional importance, बिल्कुल धक्का ही हो रहा है, तो आपको वो करवाना चाहिए। बाकी ये है कि कई चीज़ें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह खास तौर पे पंजाब के कंटेक्स्ट ਆਪਾਂ कहना है कि ਭਰਾਵਾਂ ने ਵੰਡ कर ली एग्रीकल्चर लैंड दी, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खानगी तकसीम। खानगी तकसीम, यू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, दोनों में फर्क है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन इज इंस्ट्रूमेंट विच सीवर्स द जॉइंट स्टेटस, whereas since partition and exchange in rural areas has not been notified, it's a slightly technical subject है intersection वाला, under the Transfer of Property Act for Punjab, आप जुबानी तबादला कर सकते हो। अब वो कहते हैं फिर जुबानी कहाँ है तबादला, आपने कहा ये कागज है, दैट कागज इज merely a memorandum of a transaction which already has been carried out, कि जैसे ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। that instrument, that memorandum of either exchange or partition is not subject to stamp duty because it is not a document which is either compulsorily registrable or a document which changes the status of ownership। ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਦੇਅਰ ਦੀ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਮਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਵਿਦਨ ਦੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ but it is to be seen in the intersection of not only Stamp Act, Transfer of Property Act, Registration Act, and subsequently the whole chain, अगर आपने इंतकाल करवाना है तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। सो आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। मेरी बेनती ये है कि सवाल बेशक 3 कर लें, लेकिन एक एक करके अगर मुझे सवाल करेंगे तो मैं फिर उसको एक एक करके ही जवाब दूंगा, वरना तीसरे पर मैं करूंगा मैं पहला भूल जाऊंगा। सो चतरा साहब, तो पहला सवाल है वह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਸਟੈਂਪਡ ਔਰ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਸਟੈਂਪਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ? Sir, distinction between unstamped and insufficiently stamped documents. देखो, as far as the question of
Section 35 and understamping, it comes in the same category. If something is required to be stamped by 100 rupees, it is 99 rupees आपने लगाया वो भी understamped है, zero लगाया तो वो भी understamped है. So therefore that comes that the valuation is not in doubt, but qua the valuation you have put less than the prescribed in the schedule, that becomes understamped. Undervaluation is where the very valuation is in doubt, because stamp duty is tied up with the valuation that you declare. Or understamped wala, once it is declared understamped, unless you get relief from the collector, and it will not be admissible as evidence in any proceedings, including quasi-judicial proceeding, tribunals, arbitration, so on. It's where Section 35 regarding admissibility is very, very, और उसमें फिर पेनल्टी भी है, पेनल्टी भी अप टू 10 टाइम्स. मैंने आज तक लगती नहीं देखी, लेकिन प्रोविजन उसमें अंडरस्टैंपिंग में है. सो अंडरस्टैंपिंग इन मेनी वेज हम देखते नहीं है, लेकिन खतरनाक वो अंडर वैल्यूएशन से ज्यादा है. और जब परचेजर दी प्रॉपर्टी दी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती फॉर अंडर वैल्यूएशन, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕੀ? ਰੈਮਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is appealable to the divisional commissioner, and that is the first and the only appeal. Revision है नहीं, but in odd cases the Chief Controlling Revenue Authority is using the powers, but in rare cases. But I have seen, would have seen for 2 decades of such cases, those powers are exercised basically in favor of the state. Commissioner has let a person go on whatever ground, and still audit itraz wahan khada hua, so then the Chief Controlling Revenue Authority uses that. And उसके बाद then of course is the writ jurisdiction, where you say ये तो साहब ये शेड्यूल में है ही नहीं, ये तो फैमिली सेटलमेंट है. इट इज merely recognizing NHU of partition जो 1956 में होगी थी, तो वो है. So those issues then go up to the Supreme Court के, ये तो under probate of a bewill है. So those complicated questions can be agitated, but in simple straightforward cases where you have made some declaration and collector rate से कम है, so it is very difficult to get away from. And then there are also, I think, running interest we have. The more you delay, उतना वो आपके पड़ेगा. अगर करना भी है, I would strongly suggest under protest जमा करवा के आप कीजिए. लास्ट क्वेश्चन, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇक्स ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਰਸ ਕਰਦੇ हैं in respect of undervalued या insufficiently stamped documents? देखो ज़्यादातर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. So main thing is, which I find, is the matter where people say that collector rate is high, and therefore ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ we are paying the full duty. That can open up a Pandora's box for both the seller and this thing. Otherwise, one is paying the stamp duty and one has to be done. बाकी corporate sectors they ने merger and acquisition they issues ने and so on. Those are rare ones. But if you say that I paid the full stamp duty, from the fiscal angle of the stamp duty authorities, you'll be fine. But if that instrument and the automatic reporting system, it comes to the income tax authorities, one can be in trouble. Chatra Saab, we have time. There are certain questions popping up and disappearing. I'm happy to take them. But एक हैगा है, if an instrument to be registered is not registered, can it be regularized after time बाद? नहीं देखो, जेड़ा registration act very clearly states which instruments are compulsorily registrable and which are not. There's entire section on wills which says that will is not a compulsorily registrable document, but at the same time, if you want to register it, these are the provisions, and it is not subject to a great amount of stamp duty. On the other hand, for instance, while we are at it, let us discuss in terms of power of attorney and also in terms of agreement for sale. On agreement for sale in Punjab is not a compulsorily registrable document. It is something that you enter between the two. So it is an agreement. So what is actually happening, and stamp duty ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਤੀ ਹੈ 1%,
and Punjab ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, one will have to check up. But what is happening is that that agreement for sale normally, that is a huge catch. Or normally it is because neither the seller nor the purchaser is trusting each other, is executed at the full amount ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫॉर 1 ਕਰੋੜ 90। ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ 60 ਲੱਖ ਦੀ। So what people do, and 60 lakh is the collector rate. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ agreement to sale, which is not compulsorily registrable, then people after the registration is ਨੂੰ destroy ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ for various reason ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਜ਼ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। It is not a compulsorily registrable document. So then sometimes proceedings are reopened on that ਕਿ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਤੇ why should it not be done at that level? So those type of things also come up, and in fact this has been one of my suggestions as Financial Commission Revenue and as a private citizen now, that please make ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ this is a major cause. Please make the agreement for sale compulsorily registrable, even if you levy 1 rupee stamp duty on that। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਡ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਬਟ unlike will, which can be revoked at any time but comes into play only on the demise, the power of attorney, you're an agent, and as long as the person is alive, the moment the person dies, the power of attorney vanishes. ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? So the other component is that even if the power of attorney says it is irrevocable, there is nothing like irrevocable। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਐਂਡ ਸੂਰਿਆ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਤੀ, ਵਿਲ ਕਰਾਤੀ, ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਡੂ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਦ ਲੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। I mean, it is not neither, it's not only illegal, but it is also not a prudent commercial practice also ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। TPA professor made agreement to sale as, sir, it has not been done in Punjab। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ the agreement to sale in TPA, it has not been notified in Punjab। that is exactly what I have been saying ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। Last We question can है। take other questions if there are any। Last question, if penalty is paid, will the document become admissible? हाँ जी, अगर पेनल्टी दे दी जाती है कि वो डॉक्यूमेंट हाँ जी, admissible बिल्कुल। है? Understand that as I touched, section 35-36 is very clear that in the event it is paid, it becomes then it is proper for admission, because the whole idea is to collect stamp duty। and दूसरी ये भी है कि अगर section 31 section 36 अगर if wrongly admit भी कर लिया understamped ਨੂੰ, then ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ then you don't go into it does not affect that thing। so but those are rare cases। and ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ। the charge is on the property। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, to the extent the estate is in the hands of the heirs or to whom he has bequeathed, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ 300 ਵਿਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਯੂ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਸੋਵਰਨ ਡਿਊਜ਼, as long as the land does not vanish into thin air, they don't really go anywhere। and that is one of the criticism of the Indian banking code, that instead of recovering sovereign dues and even employees this thing,
you are going in for debt resolution under the pretext and taking a huge shaves. Reliance Communication Infrastructure ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ 99% ਸ਼ੇਅਰ 90% ਸ਼ੇਅਰ 50-55% ਦਾ ਆਮ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਬਟ ਵਿਦਨ ਦ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿਕ ਗਈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ the stamp authorities will recover that. Chandra sir. Thank you, sir. Thank you for sharing your knowledge. ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਵਰਡ ਮੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ them to the best of my ability and it's been a pleasure with all of you and thank you very much. Thank you, sir. Thank you.